प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट या विषय आज पढ़ा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड्स produced by plants that are not essential for survival but have ecological or commercial importance। कौन कहली जे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होउछंदी से कंपाउंड गुड़ाक जी प्लांट प्रोड्यूस करिथाए आउ माने जो प्रॉडक्ट मानकर किसी एसेंशियलिटी न थाए सर्वाइवल पाई प्लांट्स रो सर्वाइवल पाई केवल इकोलॉजिकल किंबा कमर्शियल इंपोर्टेंस रही से मानक आम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोली कहि परिबा। से मानकर एग्जांपल देले आम पाइबा जे सेथिरे अल्कालॉइड आसी पारे टानिन्स रेजिन्स एंथोसियानाइन्स लैटेक्स ग्लाइकोसाइड्स स्टीरोइड्स एंड फिनोलिक्स। ग्लाइकोसाइड्स भितर ही स्टीरोइड और फिनोलिक्स आसीबो। सॉरी भाई थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। देखो कौन कहते टर्पेनॉइड्स फ्लेवर्स परफ्यूम्स एंड एग्रोकेमिकल्स। अच्छा अल्कालॉइड कौन सेटा होची नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेले बेले आसे जे अल्कालॉइड सब बेले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रे बहुत कि समय आम अल्कालॉइड्स टानिन रेजिन्स विषय पढ़ी था बट टानिन रेजिन्स तो बुझा पड़े एंथोसियानिन हो गला से तो केमिकल कंपाउंड लैटेक्स हो गला ग्लाइकोसाइड्स बट अल्कालॉइड गोटे इंपोर्टेंस तार नाइट्रेट गोटे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तापर जीवा आम जे प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर एंड अच्छा हाँ प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर एंड इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आगे देखिबा जे प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर माने कौन देख से कहले जे प्लांट सेल सस्पेंशन माने होचे इट इज एन इनविट्रो टेक्निक वेयर सिंगल प्लांट सेल्स और स्मॉल सेल they aggregates to form grown dispersed and multiplied within an agitated liquid nutrient media। so आमर प्लांट सस्पेंशन कल्चर होची गोटे प्रकार इनविट्रो टेक्निक वेयर सिंगल प्लांट सेल्स और स्मॉल सेल एग्रीगेट्स सिंगल प्लांट सेल्स कि स्मॉल सेल्स गुड़ाक आग्रिगेट करती आग्रिगेट कलापर ग्रोन बढ़े से डिस्पर्स्ड हेबे एवं गोटे मल्टीप्लिकेशन भी होता है गोटे एजिटेटेड लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया गोटे लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया भितर ही ये सब काम सब होता है। तापर आम कहले जे इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स। अच्छा इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स माने कौन जगह हेलानी बोली ऊपर लिखी देचे लगे immobilized plant cells that are trapped or fixed in a support material so they can't move but remain alive। मतलब प्लांट सेल्स गुड़ाक जे गोटे फिक्स्ड माने गोटे फिक्स्ड इन ए सपोर्ट मटेरियल ऊपर से माने ट्रैप्ड होकर रही था किंतु ट्रैप्ड होकर रही था जे बट दे रिमेन्स अलाइव बंचिकी था लगे। तो सेटा होची इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स सॉरी these methods allow controlled production in a laboratory और इंडस्ट्री। तो ये जो मेथड प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर किंबा इमोबिलाइज प्लांट सेल्स से गुड़ाक सब जो मेथड्स गुड़ाक दीज आर advantages over whole plants the continuous and reliable supply of metabolites से माने continuous and reliable supply of the metabolites these methods allow controlled production in laboratory or industry। ये मेथड्स गुड़ाक जो आम प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स these methods are used to control production in laboratory or industry। and advantages over whole plants continuous and reliable supply of metabolites। some advantages is they have the continuous and reliable supply of metabolites and have consistent quality and yield। they have the consistent quality and yield not affected by environmental conditions। no metabolites are affected by the environmental conditions so they can produce consistent qualities of you can say whole plants। production schedule can be controlled and predicted। extraction from cultured cells is often easier than from the whole plants। गोटे कल्चर्ड सेल्स एक्सट्राक्शन करवाटा बहुत इजी होता है दैन फ्रॉम द होल प्लांट।
होल प्लांट अपेक्षा जो कल्चर सेल्स कहीं एक्सट्राक्शन करवाटा इजी होता है ना, बिकॉज इट हैज सिंपलर स्ट्रक्चर एंड ए फ्यूर इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस। यार गोटे सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रही है एवं बहुत कम इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस रही है। सो इट हैज सम एडवांटेजेस ओवर होल प्लांट्स है। yield enhancement, the yield in cell culture is usually lower than in whole plants but can be increased by these methods। ମାନେ ସେଲ୍ କଲଚର୍ ଯେ ଇଲ୍ଡିଂଟା ହଁ ସେ ଲୋ ହେଇପାରେ ହୋଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଠାରୁ, ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ମେଥड्स। ଯେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଂ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋକେମିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ଆମେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଆଉ ବାୟୋକେମିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋକେମିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ କହିଲେ ଯେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ଗ୍ରୋଥ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଇଦର୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ଅଫ୍ କଲଚର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ମେଟାବଲିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ହେଲା କି କଲଚର୍ଡ ସେଲ୍ସର ତାର ହିଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ଗ୍ରୋଥର ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ମେଟାବଲିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ यूजिंग ऑप्टिमाइज्ड कल्चर टेक्निक। हाँ, एथिरे आम ऑप्टिमाइज्ड कल्चर टेक्निक यूज कर ऑप्टिमाइज्ड ये कौन इन सम केसेस सेल कल्चर्स प्रोड्यूस 2 to 10 टाइम्स मोर मेटाबोलाइट्स दैन द पेरेंट प्लांट अपेक्षा से 2 to 10 टाइम्स मोर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करी। ऑटोमेशन एंड इमोबिलाइज्ड सेल सिस्टम हेल्प इन इम्प्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ऑटोमेशन प्रोसेस हो कि immobilized cell system process, they can also improve the production efficiency को आराम से increase करी पारंते। And then there are applications, the pharmaceuticals, medicines, perfumes, flavors, agrochemicals, the metabolites, secondary metabolites are used, important for industrial production of valuable plant compounds। For the valuable plant compounds, I mean industrial production is important। So like, so these are the applications you have to remember। So production of secondary metabolites में देखिले these are the compounds, these are the secondary compounds that are produced by the plants but not essential for the survival, only they are used in ecological and commercial importance only। and some secondary metabolites examples alkaloid सेटा गोटे हूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, टानिन सेला रेजिन एंथोसायानिन लैटेक्स एटसेट्रा बहुत किसी अच्छे। तापर आम देखिले व्हाट इज प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर, आ गए देखिले जे इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स कौन। प्लांट सेल सस्पेंशन कल्चर आम देखिले जे गोटे सिंगल प्लांट सेल किंबा स्मॉल सेल गुड़ाक आग्रेगेशन होगी केमती से माने फॉर्म करुछंती मेटाबोलाइट्स है कि। सेकेंड हूँ इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्स। सो इमोबिलाइज्ड प्लांट सेल्सटा कौन थिला जे plant cells that are trapped or fixed in a support material so they can't move, so na move kari paribeni but remains alive hai to rahi paribe। so and there are the advantages of our whole plants। advantages ame dekhile kon advantages अछि तापरे सेटा को आउ रिपीट करी बट अधिक लेखा अच्छे जे कंसिस्टेंट क्वालिटी आ यील्ड मेंटेन होकर रहिबो विदाउट द अफेक्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। तांकर प्रोडक्शन शेड्यूल आम चाहिए कंट्रोल करि परिबा, प्रेडिक्शन भी दे परिबा है कि। आ गोटे कल्चर सेल्स एक्सट्राक्शन करवाटा इजियर होता है दैन द होल प्लांट्स एक्सट्राक्शन करवाटा। कहीं ना इट हैज सिंपलर स्ट्रक्चर, या पाखे गोटे सिंपल स्ट्रक्चर रही है, इंटरफेयर करने कौन से सब्सटेंसेस रही न था। यील्ड को केमती एनहांस करवा आम जे यील्ड इन सेल कल्चर इज यूजुअली लोअर देन इन होल प्लांट्स बट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एतिक प्रोसेस। सेल कल्चर जो यील्डिंग प्रोसेसटा बहुत लो होता है देन इन द होल प्लांट जी आम प्रोडक्शन कर सेल कल्चर से हो पारनी। तापाई किसी प्रोसेस भी कहले जे मैनिपुलेटिंग क्या तार फिजियोलॉजिकल कि बायोकेमिकल कंडीशंस मैनिपुलेशन हो, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कल्चरल टेक्निक है, ऑटोमेशन इमोबिलाइजेशन प्रोसेस कर एंड देयर आर द एप्लीकेशंस।
ମାନେ ଫାର୍ମାକ୍ୟୁଟିକାଲ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ଫ୍ଲେଭର, ଆଗ୍ରୋକେମିକାଲ ଏସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ ଆଉ କ'ଣ।